everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. आज हम बात करेंगे, we will start with the C programming basics just because yesterday I have announced for all of you कि हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पहले सी लैंग्वेज का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ सेशंस में मैं आप लोगों को पहले ये सारे बेसिक्स बता दूंगा ताकि आप लोग स्ट्रगल ना करें। यू विल नॉट स्ट्रगल विद द बेसिक्स एंड एटसेट्रा। ओके, चलिए स्टार्ट करें सेशन को। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज मेंबर्स हु डोंट नो अबाउट मी। माई नेम इज विश्वदीप, वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल, working as a plus educator also on Unacademy platform. I have written GATE exam multiple times. These are my profile. Regular question, are you guys ready? Sorry, are you guys ready? My health is not keeping well since last 1 week, so you might face such kind of disturbances in between, but it's fine. If you guys are ready, get a message, type down in the comment box that you guys are ready and we'll start the session. अगर आप लोग रेडी हैं जल्दी से मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग रेडी हैं। जल्दी से बताइए रेडी हैं, रेडी 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 रेडी, यस और नो। ओके, चलो सेशन को लाइक करते रहना एंड लेट्स बिगिन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स, एकदम बेसिक्स से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, द सेशन विल बी इन इंग्लिश जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू बोथ काइंड ऑफ आइडिया, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स रहेगा ताकि थोड़ा सा एक मिक्सचर आपका बना रहे, है ना। सी लैंग्वेज एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को लगेगा सर ये बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो, बट वो जरूरी है जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ मल्टीपल सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, चलो तो लेट्स बिगिन द सेशन। C language. Dennis Ritchie has given this particular language. Few points we should know about C language. First of all, this particular language is procedure oriented language. Means in this, when we write the code, then we write the code in terms of functions. छोटे छोटे functions के parts में हम इस पूरे लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। दूसरी चीज, ये जो लैंग्वेज है इट्स अ केस सेंसिटिव। व्हाट डज इट मीन बाय केस सेंसिटिव? Case sensitive languages, when you write the code, it differentiate between small a and capital A. कैपिटल A और स्मॉल a जो है उसके बीच में ये डिफरेंस समझता है। Means for this particular language, capital A will be treated as different character, small a will be treated as different characters. Okay? Fine? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अल्फाबेट्स। See, any language you learn, कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो या फिर मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, विच एवर लैंग्वेज यू लर्न, first of all you should know that what kind of characters or alphabets that particular language is using. You remember your childhood time when you started learning English for the very first time. What you learned? First of all, A, B, C, D. Why? Just because these are the basic things of any language. Similarly, if you, let's say, learned any language, Kannada, maybe Telugu, maybe Marathi, any other language, you first start learning the alphabets. That if I am going to learn a new language, that particular new language is constructed using what kind of alphabets? Words will be there in the language for sure. Yes, those words are constructed with what kind of alphabets? In the C language also, it's a computer language. Fine. Programming language. Fine. But it should have alphabets. Yes. So when you will write any kind of statements and words of C language, what kind of alphabets you are using to write those words and statements of C language? So you will have alphabets used, capital A to capital Z, small a to small z, numbers 0 to 9 and special characters. What are the special characters? जितने भी आपके कीबोर्ड पे दिखते हैं वो सब, all the special characters whichever you have on your keyboard.
what are the special characters? You have dot, colon, question mark, comma, double quote, single quote, brackets, then tilde symbol, pipe symbol. This is called as pipe symbol. This is called as tilde symbol. Ampersand, percentage, dash, plus, star, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, इक्वल टू, और क्या छूट गया मेरे से? सारे तो हो गए. एक्सक्लेमेशन सिंबल, एट द रेट सिंबल, और हैश, कैप सिंबल. सी, मेरे पास है कीबोर्ड, यहाँ पे देख देख के मैं भी टाइप कर रहा हूं. राइट. एक अंडरस्कोर वी हैव, दिस इज डैश, दिस इज अंडरस्कोर, and we have equal to bracket, colon, double quote. Done, almost done, everything is done. So these special characters, A to Z, capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, using these alphabets you can make the statements, है ना. सेमीकॉलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये लो सेमीकॉलन. और you can write the statements. Okay, now let's understand the next level. When I learned my English language, I still remember initially I started learning alphabets A, B, C, D, etc. After that I started learning words. A for apple, apple is a word. B for ball, C for cats, D for dog, E for elephant. So after learning A, B, C, D alphabets, I started learning words, that how these alphabets will put together so that we can have a meaningful words. ऐसा मैंने बचपन में सीखा था, तुमने भी सीखा होगा पक्का, है ना. तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही सीखना पड़ता है. We will have to learn the same thing in programming language, and that is what? That is that when these words will be put together, what kind of words, these alphabets will be put together, what kind of words we will be having. But when we understood the words, okay, apple is a word, ball is a word, boy is a word, cat is a word, right? When we started learning these words, later on we got introduced with few of the types of the word, that this is noun, this is pronoun, this word is this word is this. You remember your 4th 5th class English lessons, right? है ना. Noun is the name or name of a place, person, etc, etc. Pronoun is this, verb is this, adjective is this, all these definitions. So what we started learning in the initial phases of our programming or of our language learning, any language English learning, what we got is this, that when we will write the word, when we will learn the word, what type of word is this. इस word का type को हमें categorize करना सिखाया. If I will give you a word, let's say go, so that particular word go is a verb. If I will be giving you a word, let's say name, Ram is a name. Name means noun, it is a noun. So जब मैं आपको वर्ड दूंगा, आप मुझे बताएंगे कि ये वर्ड किस टाइप का है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा होता है. इट हैपेंस विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो, that in programming language what we will have to do, we will have to learn categorizing the words. That if I have given you one word in a C language, that particular one word is what. Let's say if I am giving you word INT, पढ़ा है, सुना है ना. This particular one word is called as keyword. It's a keyword, right? So next step what we will have to understand is we will try to understand categorizing the different words of programming language, and these words in technical language called as tokens. So token is nothing but when we have one complete statement of programming language, in that particular statement if we will take one separate word which is like a complete unit. जैसे इंग्लिश में क्या लिखते हो आप? In English you have this
I am learning C language. This is a statement. From that statement, I have taken this is a word, this is one word, this is another word, this is another word. In similar way, when you will learn compiler design course, you will try to dismantle the complete statements of your C language. Dismantle means you will make some such kind of units, small units. One unit is nothing but one word is nothing but token in the programming, जिसे आप टोकनाइजेशन कहते हैं in the compiler design. Okay, so here also you will be having different types of category of the words. What are the categories of the words? किसी को याद है? Sorry, किसी को याद है? What are the categories or C tokens? First category is keyword. Second, identifier. Third, operators. और कुछ है? Anything else? Anything else? Keyword, identifier, operator, these are the basic categories. Anything else? और कुछ है जो C tokens में आता है? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बेसिकली ये तीन चीजें हैं. बेसिकली ये तीन चीजें हैं. इसके अलावा भी और हमारे पास होते हैं जो टाइप स्पेसिफायर्स या डेटा टाइप स्पेसिफायर्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग. ठीक है, चलो अब ये है क्या. बेसिकली हमें इतना ही जानना ठीक है. What are these three different types of words? First is keyword. Okay, now again in English itself, if I talk about, in English, if we talk about, we have some dictionary words. This particular device is having a name. This is a helicopter. Nahin, this is a mobile phone, right? Pen or stylus. This is a remote control. This is a water bottle. Why we are having this as water bottle only, not the helicopter? This is not a monitor screen, right? No. Why not? Just because. See what happens. We have each and every word defined in English, and it has a specific meaning. It has a specific definition and usage. Like in English language, this particular device has been given name as remote control. So this will be called as remote control only, and we will use this particular word remote as wherever it is suitable. होता है ना ऐसा? ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है कि कुछ वर्ड ऑलरेडी आपको दे रखे होते हैं. कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको दे रखे होते हैं, और उन वर्ड्स का यूसेज एज इट इज होता है. The usage, the definition of that particular word is already there, and use you can have with that type only which is defined. और तरीके से यूज नहीं कर सकते. Like the word teaching. Right now I am teaching, not singing. Why? Just because teaching is having a predefined word meaning. Similarly, यहां भी वैसा ही है. The keywords are those words which are defined in the programming language dictionary. These are the dictionary words, and their meaning is predefined, and their usage is specifically that only which is predefined. You cannot use them in some other way. This is keyword. So keyword is called as such kind of dictionary words which have predefined meaning and usage. Okay, now can somebody tell me what are the different keywords? जल्दी से बताओ क्या क्या कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में. आप लोगों को पता है क्या? What are the keywords we have in the C language? These are. मैं सारे लिख के लाया हूं. I have typed down everything.
सर मैं सब्सक्रिप्शन लेना है, तो बेटा ले लो, आज तो ऑफर चल रहा है सब्सक्रिप्शन का। कोड लो, VDEEP10 कोड लगाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, 20% डिस्काउंट मिलेगा आज, आज ही। ठीक है, 20% डिस्काउंट मिलेगा आज। So these are the keywords: auto, double, int, struct, break, else, long, switch. These are those words which are having predefined meaning. You can use int keyword as for integer data type only. You cannot use int somewhere else. और कहीं int keyword use नहीं कर सकते। Okay, so these are the keywords we have in the C language. These are having basic predefined meaning and usage. Then we have identifiers. In this real world also we have, इस real world में भी ये चीज होती है, एक सिंपल सी चीज है। In this real world also we have the same thing. The same thing is what? The same thing is some English words are there. Apart from some dictionary words, we define our own words. Why? Just because we want to name. We want to name our houses, we want to name our cities, we want to name our people, we want to name our pets, we want to name our mobile phones, cars, and every single thing which we have in this world, which we made, man-made things. जो हम चीजें बनाते हैं, उन चीजों को हम नाम देते हैं। right, we give the name of each and everything, that those names are called as identifiers. So in programming language also, when we define something by ourselves, like we define variables, we define arrays, we define structures, functions, we define lots of other things, constants, right? So when we define these things, we will have to give the name to these people. We will have to give the name to the user defined things, and those names are called as identifiers. ठीक है, तो identifiers are what? Names given to user defined stuffs, like what? Variables, constants, and like arrays, structures, and functions, etc. These are the identifiers. Now, if we are giving the name to these identifiers, we have some rules. We have some rules. कुछ रूल होते हैं, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे. The first rule of identifier is the name which you want to give to an identifier. As an identifier, it should not be a keyword. ये keyword नहीं होना चाहिए. It should not be a keyword. First thing. Second thing, it can only contain capital A to capital Z, comma, small a to small z, comma, 0 to 9 and अंडरस्कोर. ये कॉमा जो है वो सेपरेटर है यहां पे. बस अगर कोई आइडेंटिफायर आप लिखना चाहते हैं तो उसमें कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर, बस इतना आ सकता है. देयर इज नो एनी अदर स्पेशल सिंबल यू कैन यूज इन द आइडेंटिफायर. You cannot have dot in the identifier, question mark, comma, any other dash or anything else. आप उसमें नहीं ले सकते.
सर जो आप YouTube पे पढ़ा रहे हो ये सफिशिएंट है गेट के लिए? देखो सफिशिएंट क्या होता है ये बताओ पहले, कि क्या गेट क्रैक हो पाएगी? एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप गाइडेड स्टडी करते हैं ना, और अगर आप YouTube पे पढ़ते हैं, तो जो YouTube पे पढ़ते हो ना, उससे अगर आपकी रैंक 1000 आ सकती है, तो गाइडेड स्टडी से वो 200 आ सकती है। अगर आप फ्री में पढ़ते हो, 3 घंटे पर डे पढ़ते हो, तो आपको प्लस के या गाइडेड स्टडी के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में 1.5 आवर 1.5x एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि डबल या 1.5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उतनी रैंक या उतने लेवल तक पहुंच पाओगे। टाइम वेस्ट ज्यादा होता है यहां, आपको डाउट के आंसर नहीं मिलेंगे, कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेगा, बीच में क्लासेस स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेंगी, बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी हो जाएंगी। हम कोई गारंटी नहीं लेते कि YouTube पे अगर आज खत्म हुआ तो अगले 4 दिन में ये सेशन 4 हो ही जाएंगे। डेली टू डेली सेशन होंगे ही होंगे, गारंटी कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि फ्री लेक्चर है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। प्लस पे कोई क्लास मिस नहीं होती है, डाउट्स के आंसर दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको पता है कि टीचर सब बता देगा, हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहां आपको खुद को एक्सप्लोर करना है कि कहां से क्या पढ़े ताकि समझ में आए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। चल अभी, और व्हाट आर द रूल्स? द थर्ड रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स इज इट शुड नॉट हैव स्पेस। If you guys are really interested in your own career, then whatever the money you have, whatever the time and efforts you have, and whatever the energy you have with you, right, that should given or should be given in the correct way, so that you can get maximum benefit out of it, maximum return of investment. I'm talking about whatever the efforts and resources you are putting in, every single resource should give you return of investment. Otherwise, you will waste your 1 year, and if nothing is coming out, then you will regret later on कि कुछ और कर लिया होता शायद अच्छा रिजल्ट आ जाता। So think wisely, put your efforts, put your resources, put your money in correct way, so that you can get a good return of investment. अगर आप 1 साल देते भी हैं कैसे भी करके पढ़ाई करने में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए वहां से, तभी यू विल पुट एफर्ट्स, अदरवाइज दीज आर अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इट शुड नॉट हैव स्पेस इन बिटवीन। कि आप अगर आइडेंटिफायर का नाम लिखते हो इस तरीके से, लेट्स से आपने एक आइडेंटिफायर का नाम लिखा, नाम है फुल स्पेस प्रोग्राम, तो ऐसा कोई आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, स्पेस नहीं आ सकता उस आइडेंटिफायर के नाम। There is a session 1 day ago I have taken, and the session title on the channel in video section you can get it. The session title is all about GATE computer science. In that session I have given book name of each and every subject of GATE computer science. Fourth one, if you want to study, fourth rule is it should not start with a number. एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता ये आइडेंटिफायर। You can have numbers later like A1, A2, A3, but 1A, 2A, 3A, like this way you cannot have any identifier name. These are the rules which you will have to use to just define the identifiers. Chalo. Operators. What is the operator? Operator is nothing but a symbol which specifies any operation. एक ऐसा सिंबल जो किसी ऑपरेशन को स्पेसिफाई करे। जैसे कि हम हमारे मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, प्लस किसको आइडेंटिफाई करवाता है, स्पेसिफाई करवाता है, एडिशन ऑपरेशन को।
वैसे ही वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, ईच ऑपरेटर इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन टू बी आइडेंटिफाइड और डिफाइंड. फाइन. अच्छा यार सेशन को लाइक कर दो यार, अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करते रहो. Okay, now these are the operators. One by one we will see them. Let's say first arithmetic operators. You all know these operators. We have arithmetic operator plus, which specifies addition operation. अगर addition operation लिखना है तो plus लिखेंगे. Then we have dash, subtraction operation, minus का sign. Then we have asterisk for multiplication. For division, we use this forward slash. Then we have plus plus, which says increment operator, and minus minus decrement operator. What is plus plus and minus minus? I'll tell you. Let's say we have an integer value a with initial value of 5. When we write a plus plus, after that a becomes 6. If we write a minus minus, a becomes again 5. So increment and decrement by 1. Plus plus, increment by 1. Minus minus, decrement by 1. Simple. Okay, increment by 1, decrement by 1. Plus plus and minus minus. Fine. Then we have percentage also. This is called as modulus operator. Sorry. This modulus operator is giving you, or is gonna give you, remainder of division. I'll explain you how this modulus operator works. It's very simple. Let's say if you have a modulus by b written like this way. So what it does? Divide a by b and return remainder. देखो रिमाइंडर और रिमाइंडर में अंतर पता होना चाहिए ना. You should know the difference between remainder and reminder. And you should know how to pronounce also. बोलना भी जरूरी है, खाली दिमाग में होने से जरूरी नहीं है. वरना रिमाइंडर को रिमाइंडर रिमाइंडर बोल रहे हो, इंटरव्यूअर भगा देगा अगर इंटरव्यू में ऐसा बोलोगे तो. ठीक है, चलो. नाउ लुक एट दिस, लिसन. हाउ डज इट वर्क? लेट्स से वी आर डिवाइडिंग 8 by 5 and taking the modulus 8 division by 5. When we divide 8 by 5, answer is 1. 1 times division done. Remainder. How much is remainder? 3. So it returns 3. Divide 8 by 5 and returns the remainder in the integer. तो division जो है वो float वाला नहीं रहेगा. सर 8 को divide करेंगे 5 से तो 1.6 हो जाएगा. No, we will have the division, the integer division only, and it will return the remainder. है ना? Similarly, let's say if I am having 5 modulus 5, then what it should return me? 5 modulus 5 से क्या return होगा बताओ जरा? 5 modulus 5 will return me 0 just because division is complete. Answer is 1, remainder is 0. If I am having 3 modulus 5, then 3 को 5 से डिवाइड करो तो डिवीजन तो होगा नहीं, 0 टाइम्स होगा तो रिमाइंडर एज इट इज 3 बच जाएगा. विल बी हैविंग 3 एज रिमाइंडर. ओके फाइन. चल, अंडरस्टूड हाउ दिस रिमाइंडर वर्क्स. दीज आर दी arithmetic operators. Sorry. Then we have logical operators. Logical operators means logic gates. Logic gates पता है ना, true false पे जो काम करते थे. These kind of operators we have. Logical operators. So logical operators we have 3. 1, 2, 3. Oops. This is logical AND.
this is logical OR, double ampersand, logical and double pipe symbol, logical OR, and this is exclamation mark called as logical NOT. Simple. One question, will you teach a full course of C programming in this particular course? No, I will teach only basics so that you can understand data structure. But if I will feel that no students will need a good programming course, I will bring it for GATE separately, a separate course for only GATE. Okay, fine. So remember, in this logical operations, any value which is non-zero is considered as a true value, and if any value is zero, then that is considered as false value. तो अगर कोई भी वैल्यू नॉन जीरो है तो ट्रू, जीरो है तो फॉल्स. मीन्स इफ आई से 3 लॉजिकल एंड 4, आंसर शुड बी रिटर्न्ड एज 1. व्हाई 1? ट्रू. 1 ट्रू, 0 फॉल्स. सो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न विल बी अ बूलियन आंसर. दिस इज कंसिडर्ड एज बूलियन ट्रू, दिस इज कंसिडर्ड एज बूलियन ट्रू. True and true, logical and true, answer is true. That's why I will get answer as 1. Is that fine? If we will take 0 and 4, it will return me 0. Why? Just because false and true, we all know, हमने ये सीखा है. ट्रूथ टेबल तो पता ही है ना तुम लोगों को. You all know the truth table, na? In logical AND. If we will have 0 or 4, it will give me true value. If any of the inputs is true, answer is true. Sorry. Simple, right? We have few more operators, but I think I will teach up to this level only, just because I just want to talk to you all. And how all of you are having the Unacademy app. We are going to have one experiment today. On Unacademy app, I am going to have a specific session in just 5 minutes now, called as open house session. In that session, I am going to talk to you guys, and I am going to give you some kind of tips for your GATE preparation, whether you are a plus learner or not, YouTube learner or not. If you are going to be connected with me, you should have Unacademy learner app.